Sir, please present delivered your lecture on mixed method strategies. We will discuss this topic in detail. There are two main areas which we will discuss today. First, we will talk about that what are the different criteria we will use to design the mixed method research, and second, we will talk about different mixed method strategies. So first of all, we need to talk about mixed method strategies. In the mixed method strategies, you know that there are two main research methods. One is a quantitative research, and second is a qualitative research. In a different research proposal and academic thesis, we used sometime only quantitative research and sometime only qualitative research, and how we can make decision that what kind of research methodology we need to use. That decision would be based on your problem statement. As you know that in a research proposal or as an academic thesis for MPhil or a PhD studies, we have two main thing. One is the problem statement, and then there is a research question. So depending on the problem statement and a research question, we may use different kind of methodologies. For example, if your research question is of more explanatory type, you want to explain the relationship between different variables through a conceptual framework, then we use quantitative research. And if we need to explore some new area which is not already researched, then we may use qualitative research. But there are some research questions in some of the theses that we need to use both of the methodologies, quantitative and qualitative. So we have to understand that if we need to use both of the research strategies, then what kind of methodologies or what kind of strategies we need to adopt. And again, it depends on the purpose of your research. It depends on the question of your research, that what kind of methodology we need to use. So first of all, if we'll see mixed method procedures developed in response to need to clarify the intent of mixing quantitative and qualitative data in a single study. For example, if you have a one single study, then in a single study you may need to mix quantitative and qualitative data collection procedures and quantitative and qualitative data analytical techniques. So if you are mixing both of methodologies in a one research thesis, then it would be called as a mixed method procedures. So today we will discuss mainly that why we need to mix and which level we need to mix and what is the criteria of mixing research methodologies. As you know that in a quantitative research, we have quantitative research we have numbers. Most of the time we have numbers and we have digits. And in a qualitative research, we have action, we have phrases, we have words. For example, if you are conducting an interview of someone and you would ask an open-ended question, the person would answer you in terms of phrases. You would get phrases. You would get reaction. The reactions can be verbal reactions in words. The reactions can be sometimes non-verbal reactions or non-verbal cues. So in qualitative research, you need to analyze. You need to get words. You need to get actions. You need to get reactions. You need to get phrases. So based on both of the research and based on your research questions and research objective, you have quantitative numbers and then you have qualitative words and action, and then you have to mix both of them. And why you need to mix? Obviously, you need to mix it because of some specific purpose, because of some specific objective. And you have to know that what is objective, what is the purpose, and then based on that objective and purpose, you need to mix them. So if so I have to design the whole presentation on a two main segment. One is the criteria of mixing. There are 4 criteria of mixing research, and second is the different strategies that how we will mix them. What would be the mixed method strategies? The two main segment of today's presentation, as I started the presentation with just a brief introduction of our mixed method strategies, but the two main segments of the whole seminar or webinar would be, one is the criteria of mixing, that why we are mixing quantitative and qualitative and what is the criteria, and second we will talk about
the strategies, what are the strategies of mixing different kind of a quantitative and qualitative research methodologies. So we have obviously we must have a strategy of a webinar. Two options we have in front of you. One option that you may ask question in between. Second option that you can ask question at the end. So as it is a webinar, and I think you would not be able to see my video as well as you would be only able to see my PowerPoint slides over there. So the second strategy would be the best, that first I will deliver a talk of an hour or so, and after an hour or so, you may ask questions in a chat box, you may ask questions to a voice chat. So it depends on the availability of technology we have at the moment. So it is up to you. How many people are in the favor of asking question in between, and how many people are in the favor of asking question at the end? So I think I have to take an audience response on it. At the moment, we have 34 out of 101 participants registered. So it's up to you. You can send your suggestion in a chat box that you would like to have a question in between, or you would like to have a question at the end. So let's have a 2 minutes poll by the audience, that what audience would like to what they prefer. So it is up to the audience. We may get question in between, and we may get question at the end. Totally up to you. You have a 2 minutes to send your response, question at the end or question in between the session. You can send. There is a polls here, 0 by 0. At the moment, I couldn't get anything by the poll. There are 31 attendees, and I am giving the option to all of you that you can get question in the start, or you can get question at the end, in between or at the end. So it's totally up to you. What would you like? I would go for it. There are a number of people. I just want to tables to a conceptual framework. Then we use quantitative research, and if we need to explore some new area which is not already researched, then we may use qualitative research. But there are some research questions in some of the thesis that we need to use both of the methodologies, quantitative and qualitative. So we have to understand that if we need to use both of the research strategies, then what kind of methodologies or what kind of strategies we need to adopt. And again, it depends on the purpose of your research. It depends on the question of your research, that what kind of methodology we need to use. So first of all, if we'll see mixed method procedures developed in response to need to clarify the intent of mixing quantitative and qualitative data in a single study. For example, if you have a one single study, then in a single study you may need to mix quantitative and qualitative data collection procedures and quantitative and qualitative data analytical techniques. So if you are mixing both of methodologies in a one research thesis, then it would be called as a mixed method procedures. So today we will discuss mainly that why we need to mix and which level we need to mix, and what is the criteria of mixing research methodologies. As you know that in a quantitative research, we have quantitative research we have numbers. Most of the time we have numbers and we have digits. And in a qualitative research we have actions, we have phrases, we have words. For example, if you are conducting an interview of someone and you would ask an open-ended question, the person would answer you in terms of phrases. You would get phrases, you would get reaction. The reactions can be verbal reactions in words. The reactions can be sometimes non-verbal reactions or non-verbal cues. So in qualitative research you need to analyze, you need to get words, you need to get actions, you need to get reactions, you need to get phrases. So based on both of the research and based on your research questions and research objectives, you have quantitative numbers, and then you have qualitative words and action, and then you have to mix both of them. And why you need to mix? Obviously, you need to mix because of some specific purpose, because of some specific objective. And you have to know that what is objective, what is the purpose, and then based on that objective and purpose, you need to mix them. So
If so, I have to design the whole presentation on a two main segment. One is the criteria of mixing. There are four criteria of mixing research, and second is the different strategies that how we will mix them. What would be the mix method strategies? So two main segment of today's presentation. As I started the presentation with just a brief introduction of a mixed method strategies, but the two main segments of the whole seminar or webinar would be, one is the criteria of mixing, that why we are mixing quantitative and qualitative, and what is the criteria, and second we will talk about the strategies, that what are the strategies of mixing different kind of a quantitative and qualitative research methodologies. So we have obviously we must have a strategy of a webinar. Two options we have in front of you. One option that you may ask question in between. Second option that you can ask question at the end. So as it is a webinar, and I think you would not be able to see my video as well as, and you would be only able to see my PowerPoint slides over there. So the second strategy would be the best, that first I will deliver a talk of an hour or so, and after an hour or so, you may ask questions in a chat box, you may ask questions through a voice chat. So it depends on the availability of technology we have at the moment. So it is up to you how many people are in the favor of asking question in between, and how many people are in the favor of asking question at the end. So I think I have to take an audience response on it. At the moment, we have 34 out of 101 participants registered. So it's up to you. You can send your suggestion in a chat box, that you would like to have a question in between, or you would like to have a question at the end. So let's have a 2 minutes poll by the audience, that what audience would like to, what they prefer. So it is up to the audience. We may get question in between, and we may get question at the end. Totally up to you. You have a 2 minutes to send your response. Question at the end or question in between the session. You can send. There is a poll here, 0 by 0. At the moment, I couldn't get anything by the poll. There are 31 attendees, and I am giving the option to all of you that you can get question in the start, or you can get question at the end, in between or at the end. So it's totally up to you. What would you like? I would go for it. I have no issue. There are a number of people. I just want to name here the people who are present. Sufia Sultana, she raised hand to ask a question. I think Sufia need to write a question in the chat box maybe. Then Abdul Asif, then Arfa, Naveed Ahmed, he would like to ask question as well. I don't know what's the way of asking question, how they can. Then Arfa Adam, Ali Raza, Arif Shah, I would like to know that who are attending. Asif Ali Shah, then Dr. Hafiz Muhammad Quram, Dr. Wajia Shafqat, Fahad Tafridi, offline, Farah Naz, Hamad Khan, Irfanullah Khan, Khalik Raza, Kubra Shaheen, Madia Arshad is here, Mafia, or his name is right, maybe Mafia Shehzadi, then Mavish Ghafoor, Muhammad Imran, Muhammad Ali Sayyed, Muhammad Irfan Zaman, Muhammad Danish, Muhammad Saeed, Nooreen Noor, Rafiq Khan, Riaz Hussain, again Sufia Sultana, Ayman, Waqasur Rahman, and Zahid Iftikhar. These are the people who are here. So I think any comments in the chat box, what they would like to have. They need question in the start, they need a question at the end of the presentation. In start means that, okay, here is the poll, that's great. This is much echo in the voice. Yes, there is an echo. I think it is a technological issue. I need to speak slower, I don't know. Hi, I cannot hear the lecture, Ali Raza, at the end, Riaz Hussain at the end, afterwards, okay? And when you finish lecture, Zahid Iftikhar at the end.
Vajia, Dr. Vajia is looking for question in between. Okay, Dr. Vajia, you can ask some of the question in between, right? You can send request or suggestion in the mailbox, and I would obviously try to answer your question in between. Noreen Noor at the end, Hamad Khan at the end as well. So question at the end, and at the end of the session. You not mix both strategy. Why? Why not mix both strategy? Okay, we will answer the question. Why not mix both strategies? There are options that we don't need to mix both strategies. Sometimes you don't need to mix strategies. You don't need to mix strategies just for the sake of mixing. It depends on your questions. It depends on your problem. Sometimes there are some problem in which you have to adopt both of the quantitative and qualitative research strategies. So that's why we need to mix it. So we will elaborate on it, Riaz Hussain Saab. Sufia Sultana at the end. Okay, most of the people are looking for a question at the end. Hey, Fahad Afridi said, I am Dr. Fahad Afridi. Okay, Dr. Fahad Afridi, most welcome. They didn't mention doctor here. They have to, after workshop. Okay, so I will ask question at the end. Fahad Afridi said. Madhya Arshad, it will be fine to have question answer session at the end. Mavish Kapoor at the end. Can we ask question between the sessions, sir? Yes. Asif Ali Shah, you can ask question at the end, in between as well. No issue. So at the end, Naveed Ahmed at the end, sir, and Ali Raza, I can't hear. Okay, Ali Raza, your message has been conveyed to the organizer. They can do something. Muhammad Saeed, yes, clear. Everyone is listening me. Hope so. Everyone is listening me. I'm very quite sure that everyone is listening me who is attending the session. So thank you very much for your comments. So we will take question at the end, but there are a couple of the people who would like to take question in between. So I would suggest them that they can send question in the chat box, and if the question would be really important, I would answer in between as well for the two people. So we have to respect all of the audience rather than going for the majority. The majority need question at the end. So this issue has been solved, and now we have to move a little forward. So what I said, that the two main segments of the presentation, keep this thing in mind. I would emphasize, I would re-emphasize. Why I would re-emphasize? Because it is a webinar, and I think you are not able to see my video. I would like to show my face, but unfortunately, because of technological issues, we are not able to show. I would not be able to show my face. So anyway, we will see it as well. So first of all, the two main areas which we will focus. The one is the criteria of mixing research methodologies. That why we need to mix research methodologies. What is the criteria that we need to mix research methodologies? And there are four criteria. And second, we will talk about different kind of a mixed method strategy. So mixing has a different strategies. So we will talk about the strategies of mixing quantitative and qualitative research, and we will also talk about the criteria of mixing. So obviously, it is very obvious that it's better to talk about criteria in the start. So what is the criteria? And based on that criteria, we will devise different kind of mixed method strategies. We will not devise, actually. This is already devised by different researchers. Two big name in mixed method research. Even I think I should say there are four big name in the mixed method research methodologies, and the four names are. I would like to acknowledge those four names, because being a researcher, it is my responsibility to acknowledge all of the people who has done a lot of work on a mixed method strategy. Four big names, which I know at least. You may tell me the other name as well. First of all, John Creswell. John Creswell is the most of the famous person in a mixed method strategies. He has a very famous book of Creswell 2009. Then along with the Creswell, sometime Plano Clark. Plano Clark is also another famous researcher, a mixed method researcher. So Creswell and Plano Clark has a joint book as well. They are co-authors of one of the book. So these are the two names. And there are two another name, Tetley and Tasha Corey. Tetley and Tasha Corey. These are the two other names, Tetley and Tasha Corey. So these are the four big names in the area of a mixed method research. So my presentation
would be based on their knowledge and their skills about mixed method research, and some of the concepts can be explained by myself as well as a researcher in the mixed method research. So first of all, let's talk about criteria of mixing. That what is the criteria of mixing research? So first of all, here is the criteria of mixing. Can you see my slide? Hope so you can. So in the criteria of mixing, there are four main criteria, right? First of all, we will move very slowly. There is no hurry. We have a sufficient time to discuss mixed method strategies and criteria of mixing different methodologies and then the types of different strategies. First one is a implementation sequence. This is the first criteria, which is written on the top in the white font with the black or light black background. Implementation sequence. The first criteria which we will use in mixing different kind of methodologies. The first one is a implementation sequence. That what is a sequence of implementing mixed method strategies. The second criteria which we will use for the mixed method strategies is the priority. That what is the priority? The priority is given to the qualitative or a quantitative. And the third thing is the integration. That how we would integrate to make quantitative methodology with a qualitative methodology or qualitative methodology with a quantitative methodology. And the third and the fourth one, which is not much need to be considered. Most of the time we ignored theoretical perspective. Most of the time we ignore theoretical perspective in our research as well, and our models are not based on the theory. So even in the mixed method research, we ignore theoretical perspective as well, but we need to consider it as well. So this is the fourth one, but not much important in mixed method research. So first criteria, we will talk about the first criteria. This table is a glimpse of the whole discussion which we are going in the next few slides. So first look at the glimpse and then we will explain each of the components separately. You will see, and if you would not be able to understand, we may ask question at the end. I would have a humble advice to all of you to write down your question in your notebook, or you can open your Word document and you can write your question in the Word document or whatever the media of writing you are using. Better to write your question in the sequence, and you may mention the slide that this question is from that slide, and at the end of the day, at the end of the presentation, we will be able to answer the question in more effective way. Because if maybe you have a question in the mind at this slide, and you may not, if you would not write it, it may be skipped, and at the end of the day, you would not get much benefit. So my humble advice to all of you to write down your question on a notebook, and at the end of the session, we will have a question. Definitely, we will have a question. So first of all, implementation sequence. If you will look at the implementation sequence, there are three options. There can be three options. One option, there is no sequence. There is no sequence. If there is no sequence, we call it as a concurrent. Concurrent means that we are implementing quantitative and qualitative research in one point in time, at parallel, right? Concurrent in parallel, very parallel, no sequence. This is the one option. The second option can be sequential. Yes, it can be sequential. Sequential means there are two options in sequential. One, second point, sequential, it can be qualitative. It can be qualitative, right? And second, third, it is a sequential quantitative. Sequential, if the qualitative first, or sequential quantitative first. So if you look at the implementation column, there are three options. One option, that there is no sequence. It is concurrent, right? Concurrent means parallel. Quantitative would be in parallel to the qualitative, or qualitative would be parallel to the quantitative. But the second two options are, second and third option are sequential. In sequential, we have a two option. One, qualitative first, and sequential, the second option, quantitative first. So qualitative पहले किए जाए या क्वांटिटेटिव पहले की जाए, ये ऑप्शन हो सकती है. तो इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंस में अगर आप देखें तो टोटल तीन ऑप्शंस हैं. पहली ऑप्शन में कोई सीक्वेंस नहीं है, कॉन्करेंट है. दूसरी ऑप्शन में क्वालिटेटिव सीक्वेंशियल है और क्वालिटेटिव पहले है. तीसरी ऑप्शन में सीक्वेंशियल है और क्वांटिटेटिव पहले है. ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंस
के ऊपर ये पहला क्राइटेरिया है जिसका जो हम मिक्स मेथड स्ट्रेटजीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में. I think you would be okay with it. Number two criteria. Now, what is the number two criteria? Number two criteria is a priority. Priority, right? Obviously, you are using both of the methodologies, qualitative and quantitative. So you have to give a priority. You would give priority to the qualitative, or you would give priority to the quantitative. And then, again, there are three options. One priority, that you are giving equal priority to qualitative research methodology, and you are giving equal priority to the quantitative research methodology. You are giving equal priority to both qualitative research and quantitative research. This is a priority, right? This is one option, equal priority to both qualitative and quantitative. Means you are giving equal importance to the qualitative research, and you are giving equal importance to the quantitative research as well. And the second thing, that you are giving priority to the qualitative research, or you are mainly giving priority to the qualitative research. And the third option, that you are giving priority to the quantitative research. So again, three options in a priority: equal priority, one, priority given to the qualitative, two, priority given to the quantitative, three. This is a priority. Number third criteria, which is very important as well. First three criteria are very important, guys. One is the implementation, second is the priority, third is the integration. Just look at the integration. Integration, there are three options of it overall. One option, that you are integrating qualitative methodology and quantitative methodology at the data collection stage. And you know that in research methodologies, there are two main stages, right? Rather, three main stages, I should say. One stage is a data collection, right? Second stage is a data analysis. And the third stage is the interpretation of the data, isn't it? Am I right? That one is a qualitative, second is one is a data collection, second is a data analysis, and third is a interpretation. There are some questions by the people. I think I should see. I have a question here, sir. Yes, Riyaz Hussain, you can ask question. Please type your question in a chat box. I will definitely answer it. Please. Riyaz Hussain, you can ask question, and I will surely answer it in between. Meanwhile, I will continue, but you can ask question. I think I would be able to see the question here in the chat box. I'm very sure. Unmute me, please. Riyaz Hussain say, unmute me, please. Okay, I have to unmute. May I have an option to unmute myself? I think organizers can help you. Do you have another option, Riyasab? Write down your question in the chat box. It would be a better option during the seminar, during the webinar. Better to write down your question in the chat box. Thank you. Because I'm not much familiar with the GoToMeeting. And okay, the Sufia Sultana asked question. Differentiate analysis from interpretation. And very good question, Sufia. Just look, first phase is the data collection. Then you are just analyzing data. For example, just assume that you are using regression analysis, right? And in regression analysis, you have analyzed, you got a results, right? You know, in the regression analysis, there are 3-4 different kinds of results, main things which we mentioned. One is our R-square or adjusted R-square, right? Second is an ANOVA table, or an ANOVA table we have a F value and its significance, and then we have another table about the beta coefficients. There are beta coefficients and their significance level, right? If you have a table of regression analysis in front of you, and you are just writing something about R-square and beta coefficient and F value, if you are writing something about them, then it would be called as just analysis, right? But if you are interpreting that this analysis means this, that R-square value mean this. If R-square is 0.32, it means 32% of this thing. If the beta coefficient is 0.28, it means this thing. If this is a steric, means 0.05 is the p-value, is less than 0.05, it means this thing. Interpreting is much more better. Interpreting, you are mentioning the value and you are mentioning its interpretation, that what is mean, and then you are discussing your results.
that if R square is this between this variable and this variable, then it means this relationship is connecting with this, or this variable is relating with this. And why it is relating? It is in interpretation. In thesis you have analysis result and a chapter name results or chapter name key findings, and then you have another chapter on discussion. So analysis is something very simple, very minor, that you are just mentioning your results in a phrases. And interpretation means that you are telling to your audience, to your reader, that why such kind of results happen and what is meant by this. So I think it would be clear. If you look at the research method, if you look at the research process in a book of Uma Sikran, research methodology, very basic book. So if you look at the research process, you will see that in the research methodology there are three main areas. One is the data collection procedure, second is the data analytical technique, and third is the interpretation. So in analysis, you just are using software and getting some of the results, and in interpretation you are giving your own point of view, and you are mentioning that why such kind of results happen and what is meant by these results. The name of the book is Uma Sikran. Uma Sikran. Sorry, name of the author is Uma Sikran. Uma Sikran is the most famous author in Pakistani academic institution in the Pakistani business school. Uma Sikran. Its recent book is available somewhere. Yes, Uma Sikran. You have right it. Yes, sent to all. Uma Sikran. This is the name of the book. Name of the author. Sorry, and the book name is a research methodology, a practical approach, or something like this. You can put on a Google, and you would get the name of the book with the full name of the author, and in the recent edition available in a different bookshop. So you can tell about the name of it, right? You got it? So hope so that Sufia Sultan got an answer. Now there is another question by Riaz Hussain Saab. Is the only pattern that for sequential quant you have to give priority to quant, and for sequential qual the priority should be given to qual? It is an interesting question. I would answer it, Riaz Hussain Saab, in the next slides, in the next few slides when we will discuss about sequential. It is not necessarily. There are different authors, there are different point of view by different authors. Some people said that if it is a sequential quantitative, पहली बात तो है कि ये sequential quantitative नहीं है इसका नाम, और ना ही इसका नाम sequential qualitative है. मैं अभी आने वाली स्लाइड में रियाज साहब आपको बताऊंगा कि ये sequential quantitative या sequential qualitative नहीं है, इनके और नाम है, और वो नाम क्या है और उनकी डिटेल क्या है, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा आने वाली स्लाइड में. So you have to wait little bit. You have to wait little bit for it. Then Father Freedy asked a question, by integration you mean the integration of methodologies? Yes, integration of not methodologies, integration of three things. Integration at the different stages. Integration of of methodologies at data collection stage, integration of methodologies at data analysis stage, and integration of methodologies at data analytical stage. Data interpretation stage. So we will talk about it in detail as well. I hope that you have to keep your answer with you. At the end of the presentation, you would get all of the answers. And if you would not be able to get answers, you can you can ask later on, right? It would be a good idea in a webinar to hold on your question. You are asking a question a little bit in advance. Just move a little bit forward, and you would get the answer straight away. Don't be worried. And if you would not get an answer, you can ask me. So I think the participants who are sitting already listening the webinar, they may have a concern that we are just stuck in between, right? I hope everyone would be satisfied with my opinion. Okay, let's move a little forward. So three major priorities. The first priority, three major criteria. There are four rather, but first three are very important. One is the implementation sequence, second is the priority, and third is the integration. Got it? So in integration, we may integrate methodologies, quantitative and qualitatives at data collection stage. We may integrate methodologies at data analysis stage, and we may integrate methodologies at interpretation stage with some combination. Means that you are integrating quantitative and qualitative with some combination at interpretation stage. And the fourth criteria is the theoretical perspective. That there are two kind of perspective.
One, that in the mixed method methodologies, the theoretical perspective would be explicit. It would be very clear, right? It would not be hidden. It would be very open, that this kind of theoretical perspective we are using, whether for the quantitative theoretical perspective or a qualitative, means inductive or deductive. And in the second option can be that theoretical perspective would be implicit. Implicit means hidden. Implicit means hidden. So two theoretical perspective: one explicit means very clear, implicit means hidden. So four criteria, but first three are very important, and you will see their impact on the next coming slide. Let's talk first about four decisions go into selecting a mixed method strategies. So four decisions. The first decision is, what is the implementation sequence of the quantitative and qualitative data collection in the proposed study? Means how would you collect data? What would be the sequence? Whether you would collect in parallel or you would collect quantitative first and qualitative first. Then the second decision, what priority will be given to the quantitative and qualitative data collection and analysis? Priority किसको दी जाएगी? Qualitative data collection analysis को या quantitative data collection analysis को? तो पहला implementation sequence, दूसरा decision priority, तीसरा decision at what stage in the research project will the quantitative and qualitative data and findings be integrated? So third thing is a stage, that is an integration, that is about integration. And the fourth one, will an overall theoretical perspective be used in the study? What kind of theoretical perspective we will use? We will use positivist research, we will use post-positive research, we will use critical incident. What kind of a theoretical perspective in terms of a methodology we're using? So you have to answer these four questions. You have to make these four decisions. First three decisions are very important. First one is implementation sequence. Second one is a priority. Third one is a stage at which you would integrate. And the fourth one is a theoretical perspective. So first see implementation sequence. What are the options? In the implementation sequence, we have few options. The researchers collect both the quantitative and qualitative data in phases, right? They would collect qualitative and quantitative data in phases. And the phases would be that qualitative data can be collected in sequential, and second option that it would be gathered it at the same time. If it would be sequential, then it would be qualitative first and a quantitative first, and if it is gathered at the same time, then it would be a concurrent. Concurrent mean it would be in parallel, right? It would be gathered at the same time. So when the data are collected in phases, either the qualitative or the quantitative data can come first. So obviously we have two options. If it is a sequential, qualitative can come first and the quantitative data can come first. When qualitative data are collected first, the intent is to explore the topic with participant at site. I think this was a question asked by someone. When qualitative data are collected first, अगर पहले qualitative data collect किया जाएगा तो इसका मकसद क्या होगा? Intent क्या होगी कि हम topic को explore करें with participants at sites. हम उसको explore करें, कोई हम interview करें, कोई semi structured interviews करें, कोई focus group discussions करें, जिसके through हम qualitative data को पहले कलेक्ट करें ताकि हम उस एरिया को, उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकें. जब टॉपिक को पहले एक्सप्लोर करने की जरूरत हो और फिर उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, तो फिर हम क्वालिटेटिव डाटा पहले कलेक्ट करेंगे. Then the researcher in the second phase in which data collected from large number of people, that is the second phase which I have written here, कि पहली फेज में उस टॉपिक को एक्सप्लोर करें क्योंकि जरूरत है उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की, और दूसरी फेज में उस टॉपिक के बारे में लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डाटा कलेक्ट करें ताकि हम उसको जनरलाइज कर सकें, उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें और उसके दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकें. विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जब आगे मिक्स मेथड स्ट्रेटजीज आएंगी, तो मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हम सीक्वेंशियल कर सकते हैं और कौन सी है जहां पे हम कंकरेंट कर सकते हैं या करनी चाहिए. नेक्स्ट इज अ प्रायोरिटी. नेक्स्ट, एज यू नो दैट द सेकंड क्राइटेरिया वाज द प्रायोरिटी. अब इसमें क्या है, वेदर ग्रेटर प्रायोरिटी और वेट इज गिवन टू द क्वांटिटेटिव और द क्वालिटेटिव अप्रोच. वेट किसको दिया जाएगा? प्रायोरिटी का दूसरा लफ्ज क्या यूज करती है मिक्स मेथड लिटरेचर? क्या यूज करता है मिक्स मेथड लिटरेचर? वर्ड यूज करता है वेट का.
वेट, वजन किसको ज्यादा देंगे, प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, किसको ज्यादा अहमियत देंगे। तो दोनों ऑप्शन हो सकती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को बराबर की अहमियत दी जाए, और दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि क्वांटिटेटिव को ज्यादा अहमियत दी जाए किसी वजह से, कोई वजह हो सकती है, कोई रिसर्च क्वेश्चन इस किस्म का है, या आपका टॉपिक इस किस्म का है, या लिटरेचर रिव्यू ये कह रहा है कि आपको क्वांटिटेटिव को ज्यादा अहमियत देनी है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि क्वालिटेटिव को ज्यादा अहमियत दी जाए। तो ये डिपेंड करता है। अभी रियाज साहब ने सवाल पूछा था इसी नौयत का कि क्वांटिटेटिव को ज्यादा अहमियत दी जाए या क्वालिटेटिव को, तो ये डिपेंड करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एज यू नो इट इज अ मैनेजमेंट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस में और मैनेजमेंट साइंस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देर आर कॉन्सेप्ट्स, there are things, but it is totally up to you that you can ask, you can do things in a different way. So it totally depends that what you are doing, why you are doing like this. So there are a few questions. I think Arif Shah, my questions in all research methods, the sequence will be the same or vary from research. It varies from research to research. It varies from research to research. Why it would be vary from research to research? Because every research has a different problem. Every research has a different research question. Every research has a different purpose. Every research has a different context. जब रिसर्च का पर्पस और हो, जब रिसर्च का क्वेश्चन और हो, जब रिसर्च का प्रॉब्लम और हो, जब रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट और हो, तो फिर जैसे जैसे रिसर्च बदलेगी तो सीक्वेंस बदला जा सकता है। इन ऑल रिसर्च मेथड द सीक्वेंस विल बी द सेम, नो नॉट सेम, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस। So I think that would be the answer of Arif Shah Saab. And Khalik Raza Saab, sir, can we say demographic perspective in fourth stage? Not really. Demographic is something different. Demographic is something different. I don't know. I couldn't get it. That what do you mean by demographic perspective? No, it is a theoretical perspective theory that theory would be explicit, theoretical background would be explicit, or it is implicit. Naveed Ahmed asked a question, sir, how implementation sequence differ from priority? This is a good question. Just look at the sequence. In sequence, you are saying कि कौन सी पहले होगी, क्वालिटेटिव पहले होगी या क्वांटिटेटिव पहले होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज पहले की जाए उसको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि हम क्वालिटेटिव पहले करें और उसको प्रायोरिटी ना दें। मेरे अपने पीएचडी रिसर्च में यही हुआ था, मैंने क्वालिटेटिव पहले की थी लेकिन मैंने उसको कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी, मैंने क्वांटिटेटिव को प्रायोरिटी दी थी। प्रायोरिटी का मतलब है अहमियत, इंपॉर्टेंस, वेट। वेट का मतलब है कि क्वालिटेटिव में 10 इंटरव्यू किए और 400 लोगों का सर्वे किया, तो किसको वेट मिला, किसको ज्यादा अहमियत मिली, क्वांटिटेटिव को अहमियत मिली, क्वालिटेटिव को तो अहमियत इतनी नहीं मिली। 10 इंटरव्यू किए सिर्फ just to explore the phenomena in the start and then develop a questionnaire and then do quantitative। तो सीक्वेंस का मतलब है तरतीब, और प्रायोरिटी का मतलब है अहमियत, वेट, अहमियत, इंपॉर्टेंस, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस का मतलब है उसका वॉल्यूम कितना होगा, थोड़े से इंटरव्यू करके लार्ज सर्वे क्वेश्चनर पे शिफ्ट हो जाएंगे या थोड़े से ज्यादा इंटरव्यू करके थोड़ा सा छोटा सा सर्वे करेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है तरतीब और प्रायोरिटी होती है इंपॉर्टेंस। आई थिंक नवीद अहमद वुड गेट आंसर, if not they can he can ask later on। So in the priority, whether greater priority or weight is given to the quantitative or the qualitative approach, especially the use of quantitative data analysis। और प्रायोरिटी दो तरह की हो सकती है, इक्वल प्रायोरिटी कि हम क्वांटिटेटिव को भी उतनी अहमियत दें, क्वांटिटेटिव सर्वे भी लार्ज करें और साथ क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग भी, या क्वालिटेटिव में जो भी आप डाटा कलेक्शन प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो भी आप काफी ज्यादा इस्तेमाल करें, तो फिर हम दोनों को अहमियत दे रहे हैं। और इट माइट बी स्क्यूड टुवर्ड इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और ये भी हो सकता है कि हम क्वालिटेटिव को ज्यादा अहमियत दें और क्वांटिटेटिव को कम, या क्वालिटेटिव को कम अहमियत दें और क्वांटिटेटिव को ज्यादा। तो ये प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी में दो ऑप्शन है, बराबर की अहमियत, बराबर की प्रायोरिटी, बराबर का वेट, या क्वालिटेटिव को ज्यादा अहमियत और क्वांटिटेटिव को कम, और क्वांटिटेटिव को कम और क्वालिटेटिव को ज्यादा। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी बात। Why this slide is not going ahead? What's the problem with your laptop, man? Just hold on. I am in the IRP office for the presentation.
Priority for one type of data or other depends on the interest of the researcher. ये देखिए, ये भी जवाब रियाज साहब की बात का शायद है किसी हद तक, कि जो अहमियत है ये डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर पर, ऑडियंस ऑफ द स्टडी पर, और व्हाट द इन्वेस्टिगेटर सीक्स टू एम्फसाइज इन द स्टडी. ये देखें, वेरी क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो प्रायोरिटी है जो आप दे रही हैं, ये डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी रिसर्चर की अपनी दिलचस्पी हो सकती है उस टॉपिक के हवाले से कि वो ज्यादा क्वालिटेटिव को, सेवर देयर आर सम पीपल विच आर कोर क्वांटिटेटिव रिसर्चर, तो वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटेटिव को ज्यादा बड़ा वॉल्यूम देते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और क्वालिटेटिव सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके कुछ रिसर्च क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकते सिर्फ क्वांटिटेटिव से. तो ये क्या है, ये रिसर्चर की इंटरेस्ट है, क्योंकि वो है ही क्वांटिटेटिव रिसर्चर. वो कैसे मिक्स मेथड को इस्तेमाल करके क्वालिटेटिव को ज्यादा करे. तो अक्सर ये इसीलिए आजकल जो डिबेट चल रही है कि मिक्स मेथड यूज करना चाहिए कि नहीं. खासतौर पे लोग डरते हैं, वी हैव अ फियर इन द माइंड कि यार मैं तो हार्डकोर क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूँ, मैं क्यों क्वालिटेटिव कर, मैं मिक्स क्यों करूंगा, मिक्स में तो मुझे क्वालिटेटिव भी करना पड़ेगा. तो वो उस खौफ की वजह से अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह जवाब नहीं दे सकते, अपनी रिसर्च की रिगर को और उस रिसर्च के अंदर जो दिलचस्पी है उसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते. So I would suggest them to don't afraid. If you are a quantitative research, do quantitative more and make your research design and your overall research revolve whole of the research around quantitative. और अगर आप qualitative researcher बहुत अच्छे हैं तो don't afraid from quantitative research. You may need to go for a little small scale survey as well after doing a lot of interviews in a qualitative research. So no need to be fearful from mixed method research. Mixed method research is giving you a leverage. It is giving you a room to use a different kind of research to answer your research questions in a wonderful and effective way. So interest of the researcher और interest of the researcher के अलावा audience of the study, कि आप study क्या कर रहे हैं, context क्या है, और तीसरी चीज and what the investigator seeks to emphasize in the study. और investigator basically study के अंदर क्या करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है. So this is a priority. I think may I take a tea in between if you allow me, because it is not a good idea to take a tea in between the session. But I have a sore throat today and I have to take a tea. Last night I was okay, but because of some issue, I have a sore throat. So I hope everyone would allow me to take a cup of tea in parallel. Yes, there is a short break, but I would not take short break, right? I would not take any short break. We will continue till the end of the session. So I think I can take a tea in between as well. And that short break is mentioned in the program, so we embedded that short break in the session, and I may take a little sip of a tea as well. I hope everyone allow me, my respected audience would allow me. So, and then the third criteria for mixing the research is the integration, right? It's the integration. Integration are the two types of data, and it might occur at several stages. There are different stages where we can integrate the data. One, in the process of the research, we can integrate the data at the data collection stage. We can integrate the data at the data analysis stage, and we can integrate the data at the interpretation or some combination of places. अच्छा, ये जरूरी नहीं है, वैसे तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, बल्कि 4 हो गई ना. अब एक हो गई आपकी डाटा कलेक्शन स्टेज, एक हो गई आपकी डाटा एनालिसिस स्टेज, और एक हो गई आपकी इंटरप्रिटेशन स्टेज. लेकिन आप ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव के साथ, ये किसी भी जगहों पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और इन तीनों में भी कर सकते हैं. कि कुछ इंटीग्रेशन, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब अभी आप स्ट्रेटजीज में आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इंटीग्रेशन डाटा कलेक्शन स्टेज में भी कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस में भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन में भी कर सकते हैं, और इकट्ठे भी कर सकते हैं. तीनों में कहीं कहीं कुछ इंटीग्रेशन आप डाटा कलेक्शन में करें, कुछ इंटीग्रेशन डाटा एनालिसिस स्टेज पे करें, कुछ इंटीग्रेशन डाटा इंटरप्रिटेशन स्टेज पे करें. इसीलिए मैंने एंड पे लिखा है आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेसेस भी आप डाटा ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं इन स्टेजेस की. और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जब मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा इस क्राइटेरिया की बेस पे. जो स्ट्रैटेजीज हैं जब वो मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि ये इंटीग्रेशन से मुराद है क्या. गॉट इट जी? So the next is integration means that a researcher mixes the data.
obviously we are collecting a data and it is a mixed method strategy. अगर हमने इसको अलग-अलग ही करना था तो फिर हम दो रिसर्च स्टडीज कर लेते, या एक ही रिसर्च स्टडीज में जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कर रहे हैं तो हमें उनको मिक्स करने की जरूरत है. और मिक्स करने में, फॉर एग्जांपल इन डाटा कलेक्शन, दिस मिक्सिंग माइट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड अ सर्वे विद क्लोज एंडेड क्वेश्चन और सर्वे. आपने देखा होगा अक्सर औकात आप में से कुछ लोगों ने सर्वे डिजाइन किया होगा तो उसमें ज्यादा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आइटम्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चनियर के एंड पे कुछ आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि नहीं होते. ये तो बड़ी कॉमन सी बात है. बहुत कम आजकल तो बहुत सारे लोग सर्विस के एंड पे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. तो ये कौन सी स्टेज है? ये डाटा कलेक्शन की स्टेज है ना. सर्वे डाटा कलेक्शन स्टेज है. डाटा कलेक्शन स्टेज के ऊपर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च, थ्रू अ सर्वे, और उसी सर्वे के अंदर आप कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. तो ये कौन सी स्टेज है? ये आपने डाटा इंटीग्रेशन की है डाटा कलेक्शन स्टेज के ऊपर. ठीक है. और या आप एक तरफ ये कर रहे हैं कि आपने एक फुल फ्लैश सर्वे किया है और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हीं लोगों से आपने कुछ उनमें से कुछ लोगों में से आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू आपने उनका इंटरव्यू किया है. So you can do that and we will learn that how to do that. अब फिर मिक्सिंग एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? आप क्वालिटेटिव थीम्स और कोर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं क्वांटिटेटिव नंबर्स में और क्वांटिटेटिव नंबर्स को आप उसमें चेंज कर रहे हैं. तो ये आप दोनों चीजें कर सकते हैं एनालिटिकल स्टेज के ऊपर जाके, एनालिसिस स्टेज के ऊपर जाके. The last one is a theoretical perspective. Theoretical perspective guides the entire design. देखें थियोरी इन मेथोडोलॉजी बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन मेथोडोलॉजी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके पूरे डिजाइन को गाइड करता है. से फॉर आपके पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है. ठीक है जी. आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो आपको गाइड कर रहा है कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है या कौन सी करनी है. अगर वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ज्यादा चांसेस हैं कि you would go for a quantitative research, means you would go for a survey. लेकिन अगर आपने इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू किसी टॉपिक को एक्सप्लोर किया है और एक्सप्लोर करने के बाद यू आर रीचिंग एट द मॉडल एट द एंड ऑफ द डे, तो दैट ऑब्वियसली इज गाइडिंग यू कि जी ये मॉडल जो आप एट द एंड ऑफ द डे बना सकते हैं थ्रू एक्सप्लोरिंग द टॉपिक, ये आप किससे थ्रू बना सकते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू, मीन्स थ्रू इंटरव्यूज. So it depends that what you are doing in it, but that is not that much. Sometimes theory is explicit in your research design and sometimes theory is implicit and no need to clearly mention. It is just hidden, it is overarching, it is at the back. So I think it is enough to talk about criteria because first three criteria are more important. Yes, Naveed Ahmed asked a question. Sir, please an example of mixing qualitative and quantitative methods at time of data analysis. Yes, we will talk about it, Naveed. That how, what is an example of mixing qualitative and quantitative methods at time of the data analysis? We will talk when we will talk about the strategies. Okay, and then there is another question. I think it's an interesting comment by someone here. I have to read that comment. Why it's not opening pan? Just look why this pan is not opening. Okay, this pan. Then Sufi Sultana, but order for us too. Yes, I think it's an organizer's job to organize a tea for you. So you can ask them. Just you can also take tea. Okay, Farah Naz ask a question. Please explain difference between theoretical and analytical perspective. Theoretical perspective is about theory. Theory and analytical perspective is about analysis. I'm not sure about your question. Please explain difference between theoretical perspective. Theoretical perspective means that what theory is guiding your research. And analytical perspective means that what kind of analysis you are doing based on your data collection strategies. So it depends. So you can elaborate your question later on. That what does it mean, what you want to ask. Theoretical perspective is very clear that what kind of theory is guiding your research. Okay, now let's talk about, we are well in time. Let's talk about, do you want to take a break for 5 minutes? I think it is a good idea because we are going to start something very serious. This was a serious talk, but the next thing is much more serious.
that is about the visual models and mixed method strategies. So I would suggest you to take, it is 2:56 on my clock, so take a 4 or 5 minutes break, and after 5 minutes break we will talk about different, as we talk about the four factors or the four criteria of mixing a research methodology, mixed method research methodology. After 4 or 5 minutes we will talk about that what are the different strategies based on that criteria. So based on the criteria, we have four major strategies. In books, six mentioned. Yes, these are actually six, but four are very commonly used. So we will discuss more about the first four, not first four, first two, and then some three, and then another from a one. So I will share that what are the four strategies which are more commonly discussed, and why we need different. So I think we will take a break at 3 sharp according to the plan. We have a 3 minutes. In a 3 minutes, just look at this slide. This is a slide for you. This is a wonderful slide I made. Not I made, it is by Creswell, Plano Clark, Gottman, and Hansen. I have given reference at the end because being a researcher, it is our responsibility to acknowledge our fellows, our research fellows, those people who are doing research in our area, our peers. So this is a slide by Creswell 2003, Creswell et al. 2003. So types of mixed method design. There are two main designs. One is a sequential designs, and second are the concurrent designs. Sequential design and concurrent design. Sequential designs and concurrent design. So if you look at the sequential design, there are three sequential designs. Well, first one is a sequential explanatory design. We will take a break at our time, inshallah. A sequential explanatory design, sequential exploratory design, and sequential transformative design. But look at first three, all of three are sequential. One is explanatory, second is exploratory, third is transformative. The first two, A and B, are very common, very common, guys. It is most common design used by researchers all over the world. I'm not saying in the perspective of, in the context of Pakistan. If you would look at the thesis across the world, across the globe, you will see these two designs are the most commonly used mixed method research designs. Third one is not much common. C1 is not much common, sequential transformative, but we will talk a little bit about it, that what is sequential transformative. Then the other designs are the concurrent designs, means the parallel designs in which we use quantitative and qualitative research in parallel. So in concurrent design, we have three. We have concurrent triangulation design. This is most common. So in concurrent design, A means concurrent triangulation design is most common. So how many are the most common? Sequential exploratory design is most common, sequential exploratory design is most common, and concurrent triangulation design is most common. Then is another two which are not much common and which are a little complex and need a high level thinking. We will not touch them more. These are called as a concurrent nested design. Concurrent nested design means nested is also called as embedded design. In some books, they haven't used the word nested. They have used the word embedded. Mean qualitative is embedded in quantitative. Mainly it is quantitative, and qualitative is embedded in it. And for example, you have a survey questionnaire, at the end you have some open-ended question. That can be embeddedness or nested. And third one is a concurrent transformative design. This is also not much common, concurrent transformative design. So six design, three are the first four are very common, including sequential exploratory triangulation, concurrent triangulation, and sequential transformative. ये चार बहुत commonly इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं. पाकिस्तानी में तो खैर अभी मिक्स मेथड अभी शुरू हुआ है, अभी इतने ज्यादा थीसिस नहीं आए मिक्स मेथड में, लेकिन across the world, across the globe, I did one of the meta analytical study in Australia. मैंने कुछ ऑस्ट्रेलियन थीसिस जो थे तकरीबन 50 थीसिस उनको लेके एनालिसिस किया था मिक्स मेथड को देखने के लिए. तो मुझे पता चला कि 88% of the theses are using mixed method design, and out of that 88%, 93% theses are using
first two design, first two and then fourth one, concurrent triangulation design. Means whether they are using sequential exploratory, or concurrent triangulation design. So my emphasis would be on these three design in today's webinar. More, I would emphasize more on these three designs, and then I will also talk about a little bit about sequential transformative and concurrent nested and concurrent transformative. So my humble suggestion to you all that in the initial stages, if you are a new mixed method researcher, if you have a newly started mixed method researcher, so my humble suggestion to all of you to use sequential exploratory or concurrent triangulation design. These three designs are quite easy to use, while rest of the other three designs are a little complex and need a high level thinking, being a mixed method researcher. So my focus would be on these three designs, but I would definitely talk a little bit about the rest of the three designs as well. Thank you very much. It is 3 p.m. and I would request you to take a cup of tea on your own desktop. I will take a tea as well. So after a tea, we will talk from this slide onward. And it is we are well in time and we are in between our session. Thank you very much. Unmuted. Okay, Bismillah Rahman Rahim. Welcome back, my dear participants. We have some questions in the mail, in the chat box. So I would like to answer the question first, and then I will move a little ahead. Madhya Arshad said, "Can't hear you, sir." I was not speaking, Madhya, so that's why you can't see me. You can't hear me. Now I start speaking, and I hope that you would be able to see me. You would be able to hear me. Okay. There are questions by Arif Shah. He said, in which category method RCB design, regression, and ANOVA module fall? Arif Shah, it's very obvious. It is a quantitative research design. These are the quantitative analytical techniques in which we fall. So these techniques can be used in a mixed method. There were questions by, I think, someone that what is the difference between sequential and yes, there was a question by Fahad Afridi. Fahad Afridi asked for a mixed methodologies book available in Pakistan. I'm not sure about the book available in Pakistan, but I have one soft copy of mixed methodology book. I would give it to Yasir, means IRP Innovator Club's organizer, and he would email you, or he would email to all of the people. I'm sorry, to all of the people who are here. So that book is in the PDF format, and that book is written by Creswell. So it is the most famous author. So one book by mixed research methodology. The title of the book is the mixed research methods by Creswell and Plano Clark. If you would put on Amazon.com, Amazon book, you would get the name of you would get the detailed name of the book and the module and the author's name. So you can check from the different bookstores whether this book is available or not, and different book publishers. So I'm not sure. I never purchased from the Pakistan. I purchased from the Australia a few of the books. So I would send you the soft copy. I would send not only to the Father Priti, but I would send to all of the participants who are attending the webinar at the moment. So it is an academic service. Muhammad Ali Sayyed asked, please elaborate sequential and concurrent design difference. Yes, why not? Ali Sayyid, you would come to know that what is sequential and concurrent. In the next few slides, you would come to know. Muhammad Marwat has left. Maybe he would not be able to listen us. And then Madhya Arshad, I think you would be able to listen me now. Naveed Ahmed sir, these are different from survey design. Yes, 100%. These designs are basically the mergers of all of the design. Naveed Ahmed, these mixed method designs, which I mentioned on the slide at the moment, the slide which is on your screen, these designs are the mergers of these all designs. These are the basic designs: survey design, case study design, action research, experimental design. But these all designs, these 4 designs can be used in the mixed method design. These designs can be mixed together based on those 4 criteria in future research. So survey design is a quantitative research design mainly. Case study design is a qualitative research design mainly. Action research is actually something very different, in which you have qualitative research and quantitative research, and then you implement the finding into the real workplace,
and experimental design, that you are doing the study in a real workplace and you are dividing the people into the two groups and doing some sort of experiment. So all of these designs can be used there, right? So these can be mixed together. So I think I answered the main question asked by the people. Mohammed Verma said he can listen, he can hear me now. Sir, suggest a book for mixed methodologies available in Pakistan. Anyway, I have suggested the book already. A book is there, right? The book name is Mixed Method Research by Crespin and Plano Clark. Okay, let's move ahead, guys, a little bit forward. The first design which we will talk here is a sequential explanatory strategy or a sequential explanatory design. So just look on the right side of the presentation. You have phase 1. That is a quantitative synthesis, and the phase 2 is a qualitative synthesis informed by the results of quantitative synthesis. Sequential, just ignore that graph and listen me what I'm telling you. In a sequential explanatory strategy, you have two options. You have one option. The option is that the quantitative data would be collected first, then quantitative data would be analyzed, right? And after quantitative data analysis, you would start qualitative research based on the findings of the quantitative data, based on the quantitative finding, and then qualitative research. So what is the sequence? It is a sequential explanatory. Sequential explanatory का मतलब ये है कि पहले आप quantitative data collection करेंगे, फिर आप quantitative data analysis करेंगे, फिर जब उसकी findings आएंगी तो उसकी findings के base पे आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करेंगे और फिर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन की बाद आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करेंगे और फिर आप इकट्ठी इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो कहने का मकसद है कि ये सीक्वेंशियल है, मतलब है तरतीब से है. एक्सप्लेनेटरी का मतलब है कि क्वांटिटेटिव पहले होगा, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस पहले होगा और फिर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस बाद में होगा. तो तरतीब हो, एक तो तरतीब है, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे. क्वालिटेटिव स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस नहीं हो जाता, और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की बेस पे क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करेंगे और फिर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन के बाद क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे you can interpret, you can synthesize the finding of both of the phases together. So this is a sequential explanatory strategy. So priority किसको दी जाएगी? क्योंकि explanatory है. Explanatory का मतलब है quantitative data को दी जाएगी. The priority typically is given to the quantitative data and the two methods are integrated during the interpretation phase of the study. So तीन चीजें बताई थी ना मैंने शुरू में, तीन मेजर क्राइटेरिया बताए थे. एक क्राइटेरिया मैंने बताया था सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस में क्वांटिटेटिव पहले आएगा, क्वालिटेटिव बाद में आएगा. दूसरा मैंने क्राइटेरिया बताया था प्रायोरिटी का. प्रायोरिटी में क्वांटिटेटिव को प्रायोरिटी दी जाएगी, ज्यादा वेट क्वांटिटेटिव को दिया जाएगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी डिजाइन है. सीक्वेंशियल है लेकिन एक्सप्लेनेटरी है. क्वांटिटेटिव पहले है, क्वालिटेटिव बाद में है. क्वांटिटेटिव को अहमियत ज्यादा दी जा रही है, क्वालिटेटिव को कम दी जा रही है. और जो इंटीग्रेशन थी, जो तीसरा कंपोनेंट था वो इंटीग्रेशन था. इंटीग्रेशन जो है वो बाद में होगी. इंटीग्रेशन जब दोनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो दोनों की जब फाइंडिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम उन फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर उसको क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन स्टेज पे इंटीग्रेट करेंगे दोनों फाइंडिंग को. तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. बहुत सिंपल बात की है मैंने कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पहले होगी, पहले क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन होगा और उसका एनालिसिस होगा. पहले क्वांटिटेटिव फेज को खत्म किया जाएगा, फिर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन होगा और उसका एनालिसिस होगा और फिर एंड के ऊपर उसकी इंटीग्रेशन होगी इंटरप्रिटेशन स्टेज पे. तो ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन है और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है और होता है, और नाम से ही जाहिर है कि ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी है. तो क्वांटिटेटिव फेज पहले होगी और क्वालिटेटिव फेज बाद में होगी और क्वांटिटेटिव फेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. लेकिन मैं यहाँ में ये कहना चाहूंगा कि टेक्स्ट ये कहता है कि क्वांटिटेटिव को आप प्रायोरिटी दें, लेकिन इट इज अप टू योर क्वेश्चन, इट इज अप टू योर रिसर्च, इट इज अप टू योर रिसर्च इंटरेस्ट, इट इज अप टू योर emphasis of the study.
कि आप क्वांटिटेटिव को कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। हो सकता है आप क्वांटिटेटिव को भी इंपॉर्टेंस दें और बाद में आपको क्वालिटेटिव को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़े। तो इट डिपेंड्स दैट यू वांट टू गिव, आइडियली क्वांटिटेटिव डाटा को इंपॉर्टेंस दें आप, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं आपको अभी इसके बारे में एक एग्जांपल अपनी पीएचडी थीसिस की दूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव को इंपॉर्टेंस दें। आप क्वांटिटेटिव को नहीं भी इंपॉर्टेंस देते तो आप क्वालिटेटिव को भी दे सकते हैं, लेकिन आइडियली क्वांटिटेटिव को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। The steps of this strategy are pictured in the purpose of sequential exploratory design. Typically, is to use qualitative results to assist in explaining and interpreting the finding of a primarily quantitative study. So, इंटीग्रेशन के अंदर आप इन दोनों की रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स को इकट्ठा इंटीग्रेट करके अपनी फाइंडिंग को फाइनलाइज करेंगे। गॉडेट जी, इस पे मजीद इस पे क्वेश्चंस आई थिंक आ रहे हैं। मैं आई थिंक आई शुड गो टू टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इस पे कर सकते हैं। ये इरफानुल्लाह खान ने क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी पेशावर से, सर इन विच केस वी गिव, सर वी विल अप्रिशिएट इफ यू हैव आल्सो कंसिडर्ड। ओके, मदिया अरशद सेट is related to the survey only. This is a no, not really. Qualitative data analysis is related to not survey only. That is related to the interviews, not related to the survey. Quantitative data analysis is related to surveys only. These are the questions which are not in the domain of this mixed method. So we will answer it at the end rather than ignoring it. Okay, right. I think there is no any significant question, and we will ask question at the end. Okay, next is sequential exploratory design. As the name indicates, it is conducted in two phases with the priority generally given to the first phase, and it may or may not be implemented within a prescribed theoretical perspective. इसमें क्वालिटेटिव डिजाइन पहले होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन होगा फेज 1 में, और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस होगा। और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस की बेस के ऊपर हम सर्वे इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करेंगे, सर्वे इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करेंगे और उस सर्वे इंस्ट्रूमेंट को फेज 2 के अंदर यूज करेंगे क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के लिए और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये उलट है, ये अपोजिट है। किसका अपोजिट है? सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी स्ट्रेटजी का अपोजिट है। सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव पहले था, क्वालिटेटिव बाद में था। क्वांटिटेटिव फेज पहले थी, क्वालिटेटिव फेज बाद में थी। ये सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि इसमें क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस पहले आएगा और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस बाद में आएगा। अब इसमें भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी मर्जी है, वैसे तो आइडियली क्वालिटेटिव को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्वालिटेटिव फेज बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, और फिर क्वांटिटेटिव का वेट कदरे कम होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप क्वालिटेटिव को कितना वेट देना चाहते हैं और क्वांटिटेटिव को कितना वेट देना चाहते हैं, किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इन माय ओन पीएचडी रिसर्च this was a strategy, sequential exploratory strategy, but I didn't give more weightage to qualitative data collection and analysis. I have collected qualitative data and I have analyzed the qualitative data, and based on that analysis I modified my survey instrument, and that survey instrument would be used later on in the quantitative data collection and analysis. But my qualitative phase was not in a big size. It was I hadn't given priority to qualitative data collection analysis. I had given priority to the quantitative data collection analysis. Why? It was because of my research question. Because my research question was, the first research question was, what are the key human resource management practices implemented in dairy farming? So this question would not be able to answer only by a survey. So to explore this question, because it was an area which need to be explored further, क्योंकि इस पे रिसर्च नहीं हुई थी, तो मैंने इस पे क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया, उसको एनालाइज किया, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन नहीं किया। मैंने सिर्फ 10 इंटरव्यू किए थे, एक फोकस ग्रुप डिस्कशन किया था, जो कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन की और एनालिसिस की, लेकिन मैंने उसको किया था, इसलिए किया था ताकि मैं अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकूं, मॉडिफाई कर सकूं। और सर्वे इंस्ट्रूमेंट को मैंने मॉडिफाई करके
फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन किया था और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस किया था। तो बात करने का मकसद है कि देखिए, यू आर अ रिसर्चर, और जो रिसर्चर होता है ना, वो किताबों को चैलेंज कर सकता है। वो किताबों को, अगर उसके पास अथॉरिटी है विद लॉजिकल आर्गुमेंट, वो बुक्स को चैलेंज कर सकता है। वो अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर, अपने रिसर्च क्वेश्चन की बेस के ऊपर, ये जितनी भी बुकिश और जितनी भी इस तरह की टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर इनको चैलेंज कर सकता है। और बाय द वे, ये जो प्रेजेंटेशन मैं इस टाइम मैंने डेवलप की है, तो ये बुक्स के बेस के ऊपर है, ये रिसर्च पेपर्स की बेस पे नहीं है। अभी जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं मिक्स मेथड के ऊपर, जो डिबेट आ रही है मिक्स मेथड के ऊपर, उनमें ये सारी चीजें एक्सप्लोर हो चुकी हुई हैं। अगर आप रिसेंट पेपर्स देखें मिक्स मेथड रिसर्च के ऊपर, तो उसमें ये कहा गया है कि इवन सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी स्ट्रेटजी के अंदर भी आप प्रायोरिटी क्वालिटेटिव को ना भी दें तो खैर है, क्वालिटेटिव फेज पहले होना चाहिए। सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी स्ट्रेटजी है तो क्वालिटेटिव फेज पहले होना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन पहले हो, फिर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस हो, और फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन हो, और फिर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस हो, और फिर इंटरप्रिटेशन हो। मतलब है, बगैर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस खत्म किए आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस स्टार्ट नहीं कर सकते। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी स्ट्रेटजी, इसमें आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस फेज में नहीं दाखिल हो सकते जब तक आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस की फेज को फिनिश नहीं करते। जब आप फिनिश कर लेंगे तो देन यू वुड मूव टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जहां तक प्रायोरिटी की बात है, ये आपकी मर्जी है, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है जो कि डिसाइड करेगा कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है और किसको नहीं देनी। लेकिन अब आइडियली क्वालिटेटिव को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन अगर आप नहीं भी देना चाहते और आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप रिगरस क्वालिटेटिव रिसर्च करें और आप क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं, तो आप ना प्रायोरिटी दें, लेकिन क्वालिटेटिव फेज पहले खत्म करें और फिर उसकी बेस पे क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करें और फिर इंटरप्रिटेशन एट द एंड ऑफ द डे करें। तो दिस इज माय हम्बल मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको इस नजरिए से देखें रादर देन एग्जैक्टली जो बुक में लिखा हुआ है उसको करें और उसके मुताबिक चीजों को करें। So use your own brain in addition to the knowledge available in the current literature. और recent knowledge पढ़ें तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। This model is characterized by an initial phase of qualitative data collection analysis. Sorry, there are some typo mistakes because of I just overlooked the spellings of a collection here. So qualitative data collection analysis पहले करें और फिर priority आप qualitative aspect of the study को दें और जो findings of these two phases है उनको integrate करें during the interpretation phase. So it's I think it's clear, और interpretation आप end पे फिर कर सकते हैं सारी चीजों को जो आपके पास है। This is another third stage. This is called as a sequential transformative strategy. ये थोड़ी ट्रिकी है और ये इसके बारे में यही स्लाइड जो सामने आ रही है इसी में ही बात मेन लिखी हुई है। The sequential transformative strategy has two distinct data collection phases, one following the other. However, in this phase design, either method may be used first. तो ये sequential transformative strategy है। आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड पहले यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव पहले यूज करते हैं या क्वालिटेटिव यूज करते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसमें सीक्वेंस जरूर है, लेकिन इसमें यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप क्वालिटेटिव यूज करें जैसा कि एक्सप्लोरेटरी में है या क्वांटिटेटिव यूज करें जैसा कि एक्सप्लोरेटरी में है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी है, इसमें आप कोई भी मेथड पहले यूज कर सकते हैं। कभी आप पहले क्वांटिटेटिव डाटा कर लें और वो कर लें, लेकिन सीक्वेंस आपने नहीं तोड़ना। जब तक एक फेज खत्म नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी फेज स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? कि ये सिक्वेंशियल है ट्रांसफॉर्मेटिव, ना एक्सप्लोरेटरी है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। और ट्रांसफॉर्मेटिव में आपकी मर्जी है कि आप जो सा मर्जी डिजाइन पहले यूज कर लें, जिस मर्जी को प्रायोरिटी दे दें। देखें अगली स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। However, in this design, either method may be used first, and the priority can be given to either the qualitative or the quantitative phase, or even to the both if sufficient resources are available. ये देखें ना, ये इंटरेस्टिंग बात हुई है अब हमारे पास कि हमारे पास हर तरह की ऑप्शन मौजूद है। 6 तो मेन डिजाइन है, हम 6 की बजाय 12 भी बना सकते हैं, 18 भी बना सकते हैं अपने यूज करके दिमाग को। बल्कि एक रिसर्च हुई है इसके ऊपर। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रे कुक्सी, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड के प्रो वाइस चांसलर हैं। उन्होंने इसके ऊपर कोई 14 डिजाइन दिए हुए हैं, 14 से 16 डिजाइन दिए हुए हैं। इन्हीं को मिला जुला के इन्हीं में
प्रायोरिटीज चेंज कर करके 16 से 18 डिफरेंट डिजाइन दिए हुए हैं। उनका बहुत अच्छा एक ट्री है, एक डिजाइन ट्री बनाया है उन्होंने, जिसमें ये जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके इनको चेंज कर सकते हैं, ये सब उन्होंने प्रायोरिटीज को मिक्स करके दिया हुआ है। तो देखें सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव में आपके पास खुली ऑप्शन है, होनी सीक्वेंशियल है, शर्त क्या है, सीक्वेंशियल होगी, जब तक पहली फेज खत्म नहीं होगी दूसरी फेज में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन आप जो मर्जी फेज पहले कर लें, आपकी मर्जी है, क्वालिटेटिव पहले करनी है क्वालिटेटिव पहले कर लें, क्वांटिटेटिव पहले करनी है क्वांटिटेटिव पहले कर लें, जिस मर्जी को वेट दे दें। वेट अब प्रायोरिटी आपने क्वालिटेटिव को देनी है क्वालिटेटिव को दे दें, क्वांटिटेटिव को देनी है क्वांटिटेटिव को दे दें, या दोनों को देनी है तो दोनों को दे दें। अप टू यू कि प्रायोरिटी आप दोनों को दे सकते हैं, दोनों को प्रायोरिटी दे सकते हैं, एक को दे सकते हैं, किसी एक को दे सकते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव को, लेकिन ऑब्वियसली आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। सो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर कि आप और फिर इंटरप्रिटेशन आपकी एट द एंड ऑफ द फेजेस आप इंटरप्रिटेशन इसकी कर सकते हैं इजीली। सो हमने अब तक कितनी फेजेस की, हमने अब तक 3 फेजेस डिस्कस की हैं, और तीनों फेजेस में थोड़ा इसको रिपीट करूंगा दोबारा ताकि जरा रीइंफोर्स हो जाए, ज्यादा एम्फसाइज हो जाए कि हमने 3 फेजेस की हैं, सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, followed by qualitative data collection and analysis and then interpretation। दूसरी हमने की है sequential exploratory, qualitative data collection and analysis followed by quantitative data collection and analysis and then interpretation। तीसरी हमने की है sequential transformative strategy। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस मर्जी को स्टेज को पहले कर लें, जिस मर्जी फेज को पहले कर लें, जिस मर्जी फेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और फिर एंड के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर दें, और जो मर्जी आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप यूज करना चाहते हैं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, वो दोनों आप उसको एट द एंड ऑफ द डे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी। ये 3 हो गई और तीनों सीक्वेंसेस थी। अब ये चौथी है और इम्पोर्टेंस वाइज ये तीसरी है और ये बहुत इस्तेमाल होती है, और इसी के ऊपर यही मैं मेन करूंगा और इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर दूंगा, क्योंकि अगली 2 स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो इतनी ज्यादा कॉमन यूज नहीं होती हैं और थोड़ी ट्रिकी भी है। तो कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी, इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप दिस इज द मोस्ट फेमिलियर मॉडल एज इट इज मेंशन्ड, और इट इज सिलेक्टेड एज अ मॉडल व्हेन अ रिसर्च यूजेस 2 डिफरेंट मेथड्स इन अटेम्प्ट टू कंफर्म, क्रॉस वैलिडेट और corroborate फाइंडिंग विद इन अ सिंगल स्टडी। देखिए बात अगर ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च भी चाहिए होती है, क्वालिटेटिव भी चाहिए होती है, आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, उसके पैरेलल आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन करते करते आप क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करते करते आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और फिर आप इन दोनों रिजल्ट्स को क्रॉस वैलिडेट करते हैं। वर्ड लिखा हुआ है क्रॉस वैलिडेट का, कि क्वांटिटेटिव के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप क्रॉस वैलिडेट करते हैं क्वालिटेटिव के रिजल्ट्स के साथ, और जो क्वालिटेटिव के रिजल्ट्स हैं उनको क्वांटिटेटिव के रिजल्ट्स के साथ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप रिजल्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट फेमिलियर मॉडल। ये कंकरेंट है, नाम से ही जाहिर है कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब है कि आप दोनों डिजाइन्स को एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों डाटा कलेक्शन पैरेलल कर सकते हैं, दोनों डाटा एनालिसिस पैरेलल कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप इनके रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्रॉस वैलिडेशन के लिए है, ये कोरोबोरेशन के लिए है, ये ट्रायंगुलेशन के लिए है। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, ऑब्जर्वेशन से, डॉक्यूमेंट से, सर्वे से, इंटरव्यू से, फोकस ग्रुप डिस्कशन से, किसी भी तरीके से जो फाइंडिंग्स आए उन फाइंडिंग्स को आपस में क्या करें, इंटीग्रेट करें, ट्रायंगुलेट करें। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि एक टॉपिक के बारे में जो आपका जवाब है वो आप एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से नहीं बल्कि सेवरल रिसर्च मेथोडोलॉजीज से हल करें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप उसको क्या करें, ट्रायंगुलेट करें। और ट्रायंगुलेशन जब करेंगे तो रिसर्च की जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब एक आपका रिसर्च क्वेश्चन आंसर हुआ है सर्वे से, और वो रिसर्च क्वेश्चन आपका आंसर हुआ है इंटरव्यू से भी, और वही रिसर्च क्वेश्चन आपका आंसर हुआ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से भी, और वही रिसर्च क्वेश्चन आपका आंसर हुआ है थ्रू ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी रिसर्च ज्यादा वैलिडेट होगी उसकी निस्बत थी कि सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है थ्रू अ सर्वे। आपका जवाब यकीनन यस होगा।
कि अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन को वैलिडेट करने के लिए मल्टीपल रिसर्च स्ट्रेटजीज, मल्टीपल रिसर्च मॉडल, मल्टीपल रिसर्च मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है और आपके सवाल का जवाब वही आया है जो कि मे भी आना चाहिए था या जो आपकी थ्योरी कहती थी, तो आप ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर सकेंगे, रादर देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी बाय वन पर्टिकुलर मेथड, मे बी सर्वे रिसर्च। तो आप लोग आपकी रिसर्च पे ज्यादा बिलीव करेंगे, ज्यादा एतबार करेंगे, ज्यादा एतमाद करेंगे, ज्यादा वैलिडेट करेंगे, ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च होगी। तो कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी में क्रॉस वैलिडेशन और कोरबोरेट किया जाता है फाइंडिंग विद अ सिंगल स्टडी, और उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च फेजेस में नहीं होती बल्कि कंकरेंट होती है, पैरेलल होती है। तो इसको पैरेलल ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, और ये कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है। This model generally uses separate quantitative and qualitative method as a means to offset the weaknesses inherent with one method with the strength of the other method. देखिए डियर पार्टिसिपेंट्स, हर मेथोडोलॉजी के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है और कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है कि नहीं होती? सर्वे रिसर्च की अपनी स्ट्रेंथ है और उसकी अपनी वीकनेसेस है, केस स्टडी रिसर्च की अपनी स्ट्रेंथ है और उसकी अपनी वीकनेसेस है। अगर आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को, दोनों मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करें और दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ से बेनिफिट लें और वीकनेसेस को इग्नोर करवा लें, तो आप देखिएगा कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर तरीके से वैलिडेट होंगे। तो दिस स्ट्रेटजी, दिस मॉडल जनरली यूजेस, जब आपको पता हो कि यार मेरी रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं दे सकती, उसके लिए क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए, और सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं दे सकती, क्वांटिटेटिव भी होनी चाहिए। तो दोनों फेजेस को आप करें, दोनों में डाटा कलेक्शन करें और फिर दोनों की फाइंडिंग्स को एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या करें, कंपेयर करें या उनको इंटरप्रेट करें या इंटीग्रेट करें। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वंडरफुल डिजाइन वी एवर यूज। I think it is a three. It is going to be a 340. So we must give 20 minutes for the question answer stage. और क्योंकि we have clear the four design, बाकी दो और हैं वो इतने ज़्यादा commonly यूज नहीं होते। और एक nested design है, concurrent nested, वो concurrent है, और nested है कि एक फेज मेन होती है और उस फेज के अंदर थोड़ा सा क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव फेज मेन होगी, थोड़ा सा क्वालिटेटिव डाटा उसमें एम्बेडेड होगा, और दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि एक मेन फेज क्वालिटेटिव होगी और उसमें थोड़ा सा क्वांटिटेटिव डाटा एम्बेडेड होगा, वो नेस्टेड है। और तीसरी जो है, जो लास्ट वन है, वो है कॉन्करेंट ट्रांसफॉर्मेटिव, कि वो कॉन्करेंट है लेकिन उसमें कोई भी डिजाइन आप यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। वो इतनी ज्यादा कॉमनली नहीं होती हैं और ना ही मैं बहुत कम रिसर्च पेपर मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने ये यूज किए हैं। लेकिन ये जो चार मैंने बताई हैं, जिसमें कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन, सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी और सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी, ये चारों आपको रिसेंट जो अच्छे जर्नल्स के अंदर रिसर्च पेपर्स हैं उनके अंदर ये आपको नजर आएंगी। सो दैट्स व्हाई आई विल गो टू द लास्ट स्लाइड, एंड दैट इज अ थैंक यू slide. I think that is the time for the question. Instead of talking more from my side, you may ask question and I can answer your question as well. So I would open the box, and now you can throw question to me. Yasir Amar would help me in coordinating with the question. There's too many questions, maybe. I think Amar just hold on. There are questions coming in a chat box. I think I should answer those questions rather than asking from the people. There are questions coming. Just hold on. I have to start from the Arif Shah. Any example regarding this design? Which design? Uzma Rafiq asked question. Sir, Azam Kamal here. When a researcher is crafting a model on the basis of already the, it's a very long question. How can I read sequential? Sir, Azam Kamal here. When a researcher is crafting a model basis of the already available data, and then on the basis of the ideal model, the coordinate framed and questioner framed, would it be a sequential? Yes, it can be. It can be sequential exploratory strategy if you already have some of the data in a qualitative phase, and that on the basis of that data you can design your quantitative phase, or you can design your model, or you can design your questionnaire. Yes, it is a sequential exploratory study. Yeah, Uzma Rafiq, this is exactly this is a sequential exploratory study. If you are designing a questionnaire or framed a questionnaire based on already collected qualitative design. Arif Shah, any example regarding this design? I think ask a specific question, I would answer you.
Father Freezy, in triangulation which one should be given priority? Triangulation any, ये तो मैंने बताया था, concurrent triangulation design में दोनों को priority, किसी एक को भी priority दी जा सकती है, दोनों को भी इक्वल प्रायोरिटी दी जा सकती है. मतलब क्वालिटेटिव को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है, क्वांटिटेटिव को कम, क्वांटिटेटिव को ज्यादा दी जा सकती है, क्वालिटेटिव को कम, और दोनों को इक्वल प्रायोरिटी भी दी जा सकती है. ये ट्रायंगुलेशन में होता है. ट्रायंगुलेशन में प्रायोरिटी दोनों को इक्वल दी जा सकती है. Muhammad Saeed, what is NGT? I don't know. This is an abbreviation, maybe very specific abbreviation. So you have to ask a specific question, Saeed Saab. Muhammad Arfan Zaman, okay, it was a nice talk. Thank you, sir, appreciating. Thank you for the appreciation. Naveed Ahmed, sir, how can we use mixed method at time of data analysis? Please example. Yes, डाटा एनालिसिस स्टेज पे मिक्स मेथड नहीं यूज करना. डाटा एनालिसिस स्टेज के ऊपर मिक्स मेथड के मुताबिक जो एनालिटिकल टेक्निक, जो मेथड इस्तेमाल किया गया है, उसको इंटीग्रेट करना है. ये जो डाटा एनालिसिस वाली आपने बात पूछी है, ये मैंने तब बताई थी जब मैंने ये कहा था कि इंटीग्रेशन स्टेज में इंटीग्रेशन जो है दोनों मेथडोलॉजीज की, वो डाटा कलेक्शन स्टेज में भी हो सकती है कि आप सर्वे रिसर्च भी कर रहे हो और साथ इंटरव्यूज भी कर रहे हो, या सर्वे रिसर्च के अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो. आप इसको एनालिसिस स्टेज में भी कर सकते हैं कि आपने अलहदा से क्वालिटेटिव रिसर्च की और अलहदा से क्वांटिटेटिव रिसर्च की, और आपने फिर इसको इंटीग्रेट किया एनालिसिस में. कैसे? आपने सर्वे किया, आपने सर्वे में से डिजिट्स लिए, वर्ड्स लिए, आप उस सर्वे में से कुछ डाटा को वर्ड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रेजेस में कर सकते हैं. आपने फ्रेजेस की, फ्रेजेस में से आपने कोई कीवर्ड एंटर किया, उस कीवर्ड को एंटर करके आप उसको डिजिट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ये अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जो आपके वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कुछ नंबर्स में, डिजिट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये एनालिसिस स्टेज के ऊपर आप बेसिकली इनको आपस में दोनों मेथोडोलॉजीज को मिक्स कर रहे हैं कि आपने क्वांटिटेटिव डाटा को थोड़ा सा क्वालिटेटिव में चेंज किया और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस स्टेज के ऊपर आपने इनको मिक्स किया कि अलग-अलग कलेक्शन की, और कलेक्शन के बाद जब एनालिसिस स्टेज आई तो आपने क्वालिटेटिव की कुछ फाइंडिंग को क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव की कुछ फाइंडिंग को क्वांटिटेटिव में मिक्स किया, और क्वांटिटेटिव की कुछ फाइंडिंग को आपने क्वालिटेटिव में मिक्स किया. और तीसरी ये है कि इंटरप्रिटेशन स्टेज. इंटरप्रिटेशन स्टेज ये है कि आपने अलग-अलग एनालिसिस किया दोनों का, और एनालिसिस करने के बाद जब आप रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने लगे तो आपने ये कहा कि जी ये सर्वे से भी साबित हुआ था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का रिलेशनशिप एम्प्लॉय कमिटमेंट में से है, के साथ है. और हमने जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद एम्प्लॉय कमिटमेंट, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे, इंटरव्यू के इंटरव्यूई थे, उन्होंने भी हमें ये बताया कि हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये जो है ना एनालिसिस, ये सॉरी एम्प्लॉय कमिटमेंट बढ़ सकती है. तो ये इंटरप्रिटेशन स्टेज पे है. मेरा ख्याल है कि ये आपको जवाब मिल गया होगा. नहीं होगा तो यू कैन आस्क लेटर. कुबरा शाहीन, नो क्वेश्चन. थैंक यू. इरफान जमीन, time for the prayer. Okay, thank you ji. Irfan sahab, pray for us as well. Or for Arif Shah, yes, we'll type the question. Okay, concurrent triangulation. Concurrent triangulation, अच्छा जी. आरिफ शाह साहब, concurrent triangulation, concurrent का मतलब होता है पैरेलल. क्या मतलब होता है? पैरेलल. कि आप क्वांटिटेटिव फेज स्टार्ट कर दें, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन करें, और उसके पैरेलल आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन भी करें, और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस भी करें, और फिर साथ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस भी करें. मतलब क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस दोनों, और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस दोनों आप पैरेलल करें, पैरेलल करें. और पैरेलल करने के बाद जब फाइंडिंग आए तो उन फाइंडिंग्स को आप क्या कर दें? ट्रायंगुलेट कर दें, उनको मिक्स कर दें, उनको इंटीग्रेट कर दें, उनको इकट्ठा एक्सप्लेन कर दें. तो ये कंकरेंट ट्रायंगुलेशन है. नाम से जाहिर है, कंकरेंट का मतलब है पैरेलल, कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पैरेलल की जा सकती है, और ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि जो फाइंडिंग्स आए उनको हम ट्रायंगुलेट कर दें, उनको इंटीग्रेट कर दें, उनको इकट्ठा करके मिक्स करें. तो ये आरिफ शाह साहब आपके सवाल का यकीनन जवाब है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. वकासुर रहमान, is there any software which can be help in mixed method? Yes, there is a software but not commonly used in Pakistan. IRB can help you in it. It's a MaxQDA. MaxQDA. I think यासिर साहब को मैं कहूँगा कि वो इसको लिख दें चैट बॉक्स में वकासुर रहमान साहब के लिए. MaxQDA is a software which is used for mixed methods, but it is not much commonly used. I tried to learn something about it, but I didn't because I was not needed for it. So MaxQDA, no, it's not MaxQDA. Max, M-A-X, M capital, A capital, X capital, QDA. MaxQDA.
Yes, and Vivo, yes, someone lick and Vivo, DDoS and Max QDA. Yes, someone had written Max QDA. Thank you for the people who are writing. I think Ishan Sheikh had written it, and thank you to Ishan. Then Zahid Iftikhar, is it necessary to mention the methodology we are going to use before starting of research? Yes, what it means. Is it necessary to mention the methodology we are going to? Yes, yes, yes. In a research proposal, Zahid Iftikhar, in a research proposal, you have to mention these strategies. You have to, if you want to defend your synopsis, if you want to defend your research proposal, you must need to mention all these strategies before starting your research. Obviously, if you would mention all these strategies, you would be better defend your thesis. Asif Ali Shah, with regards to triangulation method, would you please elaborate the process of comparing data sets collected through qualitative and quantitative? This is very broader question. With regards to yes, process of comparing data set. No. You don't need to compare. You don't need to compare data sets. Actually, you have to analyze the qualitative data separately, quantitative data separately. You have to interpret the quantitative finding separately, qualitative finding separately, and at the end you have to write all these things in a conclusion कि ये जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था ये सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च से हल नहीं हुआ बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च से हल नहीं हुआ बल्कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों से अगर आपके सवालों का जवाब मिल रहा हो तो फिर हम इसको ट्रायंगुलेशन के जुमरे में लाते हैं और आपने कंपेयर नहीं करना आप रिजल्ट्स कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप रिजल्ट्स जो आपने अलग-अलग एक्सप्लेन करने हैं और अलग-अलग एक्सप्लेन करने के बाद एट द एंड आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन के आंसर में ये कहना है कि ये जो रिसर्च का जवाब है ये दोनों जगहों से आया है ये इस यहाँ से नहीं आया बल्कि और जगहों से भी और सोर्सेज से भी हमने इसको वेरीफाई किया है तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायंगुलेशन डिजाइन Saeed Saab, thank you. NGT mean nominal group technique. I'm not much aware of it. I'm not that good in diversified techniques. You can explain to us that what is it and how it is related to the mixed method research. Then Irfan Khan, what is pragmatic? Yes, paradigmatic position of research. हाँ जी, this is a quite tricky question. This is a quite tricky question. Paradigm जो है वो फेज के चेंज होने के साथ पैराडाइम चेंज हो जाती है से फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपका क्रिटिकल एनालिसिस का जा रहा है पैराडाइम तो जब आप क्वांटिटेटिव में आएंगे तो आप पोस्ट पॉजिटिविस्ट हो जाएंगे या कुछ लोग पॉजिटिविस्ट कहते हैं हालांकि सोशल साइंसेस पॉजिटिविस्ट नहीं हो सकती पोस्ट पॉजिटिविस्ट होती है जैसे रियलिज्म कहते हैं तो पैराडाइमेट्रिक पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है जैसी फेज चेंज होती है लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कुछ बुक्स कहती हैं ये प्रैग्मेटिक रिसर्च है ये कौन सी रिसर्च है प्रैग्मेटिक जो फिलॉसफी है ना प्रैग्मेटिज्म कहते हैं इसको तो अगर आप क्रेसवेल की या टेडली एंड ताशाकोरी की किताब पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि मिक्स मेथड जो है उसमें कुछ रिसर्चर इसको प्रैग्मेटिक डिजाइन कहते हैं प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब फेज बदलती है तो पैराडाइम बदल जाती है और पैराडाइम का ताल्लुक किसके साथ है उस रिसर्च क्वेश्चन के साथ है जिसको आप आंसर करना चाहते हैं तो पैराडाइमेटिक पोजीशन इसकी होती है और फेज के बदलने के साथ ये चेंज हो जाती है कुछ लोग कहते हैं ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है और प्रैग्मेटिक का मतलब है कि वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चन so we can use any paradigm whatever the paradigm we are using whatever the methodology we are using so it is quite tricky question and it is a wonderful question we have asked Dr. Naiman कि पैराडाइमेट्रिक पोजीशन चेंज हो जाती है और अक्सर औकात इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की जाती और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी इसको नहीं किया जाता मोहम्मद सईद हाउ यूज दिस टेक्निक मिक्स मेथड आई डोंट नो सईद साहब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एरिया नॉमिनल ग्रुप टेक्निक मुझे नहीं मैंने सुनी नहीं है किताबों में ही क्या है आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं फहद अफरीदी इज एनी chance of difference of analysis due to both yes there are chances and you have to mention that that difference if sometime you are doing it sometime you are getting a different answer in qualitative than your quantitative phase
If yes, how we can tackle it? Yeah, you have to tackle it obviously through argument. You have to tackle it through your previous literature. मतलब जो भी आपका जवाब आए या जिस किस्म का भी आपका की फाइंडिंग्स आई हैं और वो दोनों फेजेस के थ्रू ठीक नहीं आ रही, मतलब अपोजिट आ रही हैं, तो द बेस्ट वे इज टू यूज द प्रीवियस लिटरेचर to explain the position of your findings through a logical argument. So the best argument can solve your problem. और इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉसिबल होता नहीं है. आपने कुछ कर करा के जरूर इसको जस्टिफाई करना होता है अपनी फाइंडिंग को. आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता. यू मस्ट हैव एन आर्गुमेंट ऑफ योर रिजल्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग. और अगर आपके रिजल्ट ऑल टुगेदर अपोजिट आ रहे हैं जो कि आने चाहिए थे आपके रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे, तो फिर एक प्रॉब्लम है सीरियस. वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फ्रेमवर्क है या जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है या जो आपके हाइपोथेसिस है वो ही ठीक नहीं थे. उनमें ही सीरियस प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम की वजह से आपका ये रिजल्ट्स और हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो रहे. अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई भी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो रहा, कोई भी जवाब उस तरह नहीं आ रहा, या जो जवाब आ रहे हैं, जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो टोटली कंट्रास्टिंग है. तो फिर इट इज अ ट्रिकी थिंग फॉर यू बीइंग अ रिसर्चर कि ऐसा क्यों हो रहा है. इसका मतलब है आपने सारा कुछ मॉडल बनाया ही नहीं था, थ्योरी के बेस पे नहीं बनाया था, बगैर थ्योरी के बनाया था. Irfanullah Khan, mixed method can be used in pure sciences such as physics. Yes, why not? You can use qualitative and quantitative in physics. For example, you can do some of the experiment and collect digits through any of the instrument used in the physics. That is a quantitative research. And then you go and ask some of the feelings of the people or the researcher about that physics idea, being a physicist. So if you are getting some data from quantitative through your laboratory and some data you are getting from a field through a people who are working on some of the physics concept, so you can integrate both of the findings. But if you are getting some of the data from people working in the field on a physics topic, so it would be a merger of a pure science with a social science, or a merger of a pure science with a management science. So yes, you can use it. It depends on your research question. A lot of people in the world, they are now merging pure science with the social sciences, and now their papers are much more publishable as compared to that you are publishing only in physics or in chemistry or biology. One of my friend in my university, he asked me कि जी मैं pharmaceutical पे फार्मेसी पे काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे हेल्प करें सोशल साइंसेस का इकोनॉमिक इंडिकेटर या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस रिसर्च, प्योर साइंस रिसर्च, आप मुझे हेल्प करें कि मैं उसको कर सकूं. तो हम दोनों मिलके अच्छी जगह पे उसको पब्लिश कर सकते हैं. तो इट इज अ गुड आइडिया दैट you can, if you are a physics professor, you can collaborate with one of your social science professor, and then you both can publish in a good journal. और इसी तरह सोशल साइंस वाले जाएं फिजिक्स वालों के पास या केमिस्ट्री बायो वालों के पास, उनको कहेंगे जी हम आपकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट को या उसके सोशल जो इम्पैक्ट है उसको स्टडी करना चाहते हैं. तो यस, रिसर्चर्स, प्योर साइंस रिसर्चर एंड सोशल साइंस रिसर्चर कैन वर्क टुगेदर in future. Muhammad Warworth, is it so that caller is using and yes, it can be possible. Yes, that is my answer. I already explained to the Marwat Saab same thing. Sir, please tell me scale development in maximum. Okay, माफिया शहजादी, yes, स्केल डेवलपमेंट हो सकता है. देखिए सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी स्टेज है ना, जो सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है उसमें अमूमन स्केल डेवलपमेंट होती है. कैसे होती है? सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की जो थीम्स आते हैं उन थीम्स की बेस के ऊपर हम स्केल डेवलपमेंट करते हैं. स्केल डेवलपमेंट करते हैं या स्केल मॉडिफिकेशन करते हैं. फुल फ्लैज स्केल तो नहीं बनाना चाहिए खुद से बेस्ड ऑन अ क्वालिटेटिव डाटा, लेकिन एग्जिस्टिंग स्केल्स के अंदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है बेस्ड ऑन अ क्वालिटेटिव डाटा. तो ये किया जा सकता है और इस स्केल को फिर फर्दर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन में और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है. तो माफिया शहजादी, यस, you can use scale development in mixed method. You can use, but the best design for the scale development is sequential exploratory study. Sequential exploratory design जो कि आप further आप उसको use कर सकते हैं और उसको उसकी बेस के ऊपर स्केल को डेवलप कर सकते हैं, स्केल को मॉडिफाई आप उसको कर सकते हैं. So you can go for it, and that is a sequential exploratory design. I think that would be the answer of your question, Mafia. Naveed Ahmed, sir, thank you very much. It's very informative session. Thank you, Naveed. Thanks for appreciation.
Arif Shah, any example of what? I didn't remember your previous question, Arif Shah. You can ask question again. Mavish Ghafoor, thank you, sir. Informative session. Player ji, बहुत मेहरबानी Mavish. Muhammad Danish, thank you, Danish, for appreciation. Arif Shah, yes, okay. Sufia Sultana, MaxQDA. MaxQDA is a software which we use for the mixed method research analysis. In case we get contradictory finding research, how we can overcome the systematic and random error. Um, we, random error. You just have to justify that this is a random error or this is a systematic error. You have to justify your answer, your findings by logical argument through previous literature. And is there any difference between research? Yes, there is a big difference between research question and hypothesis. Question is a question. In a question, you would have an interrogative sign. Question is, what is the relationship between human resource management practices and dairy farm performance? This is a research question. Hypothesis is human resource management practices are strongly related to dairy farm performance. This is hypothesis. Hypotheses are the statements. Research questions are the questions, and you have an interrogative sign. What is the relationship between H&M practices and dairy farm performance? There is a relationship between human resource management practices and dairy farm performance. दूसरे वाला hypothesis है, पहले वाला research question है. बड़ा clear difference है. Faranaz is in mixed method. I don't know. Muhammad Ward, if so, called is used in social and called. Yes, it is. It can be used. What is the best practice of topic selection? What is the best practice for topic selection? Best practice for topic selection is a preliminary information gathering. आप preliminary information gathering करें, लोगों से पूछाएं कि क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या टॉपिक है, इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि नहीं, और उसके बाद आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें. सिर्फ सुपरवाइजर के कहने पे टॉपिक ना सेलेक्ट करें. फहद अफरीदी, ओके सर. रियाज रहमान, व्हाट इज द वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ मिक्स मेथड? हर फेज की, रियाज साहब, हर फेज की अपनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होगी. जो फेज यूज करेंगे, जो आप डाटा कलेक्शन मेथड यूज करेंगे, उसकी अपनी अपनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होगी, और आपको उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, जैसे अगर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, आप क्वेश्चन कंटेंट वैलिडिटी ये जस्टिफाई करनी होगी. और इसी तरह अगर आपको तो वो क्या कहते हैं, आप क्वालिटेटिव यूज कर रहे हैं तो फिर आपको थीम्स की और इंटरव्यू कनेक्ट करने की वैलिडिटी एस्टैब्लिश करनी होगी. सो एवरी फेज यू हैव टू डू दैट. व्हाई वी शुड नॉट डेवलप स्केल? स्केल तो डेवलप करना पड़ेगा. माफिया शहजादी, अगर अगर आपने रिसर्च करनी है और क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो आपको स्केल यूज करना पड़ेगा. विदाउट स्केल यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, बिकॉज विदाउट स्केल यू कैन नॉट टेस्ट द हाइपोथेसिस without that thing. Then Arif Shah again asked question, difference between research and hypothesis. I already answered, Arif Shah. I think you heard me कि मैंने क्या जवाब दिया है. रिसर्च क्वेश्चन में सवाल होता है, हाइपोथेसिस में फ्रेज होती है, स्टेटमेंट होती है. Naveed Ahmed, please sir, it will be kind of your slides of today training are emailed on your email address. Yes, it can be emailed to you. I would give it to the Yasin Amar and he would email to all of you. Sufia Sultana, thanks Sufia. Uzma Rafiq, well done sir. Thank you for the appreciation, Uzma. It's a player. It increases my blood. More. Thank you Farah Naz. Thank you much for interesting and informative session. Thank you Farah. It's a great appreciation. Mafia Shazadi, I'm thinking develop a full-fledged scale. No. Not a good idea. Don't develop scale. It is very hard to develop scale, particularly for a new person. It is very, very hard to develop scale. Never go for a scale development, Mafia, at this stage of your life. First be a very if you are a very top researcher in your field, then you may try for the scale. I don't know your profile, your CV or resume, that you can do it or not. Mohammed Saeed, thank you much. That will be good experience and informative. Thank you. Asif Ali Shah left. Thank you. Mohammed Saeed, thank you. And thanks Amar. Okay, Saeed said thanks Amar. Mafia Shazadi, thanks sir. It was really informative. You welcome. Mafia Fahad Afridi for informative session. Thank you, sir. Arif Shah, thank you. Waiting for the next session. Oh, really? You are waiting for the next session? My God. Okay, see you next time. Everyone, be happy. Enjoy yourself. I hope you have learned some of the things. If you have learned some of the things,
It is a great motivation for me as well as a researcher. After Adam also said thank you very much. Take care, bye bye, take care, enjoy yourself.